Hello, this is Ashish Tripathi from Mount Rita G School, Jhansi, computer teacher. Today, stay safe, stay home, and be sanitized. And please attend the online classes continuously and get whatever the teachers are given. Not only in my online classes, each and every subject online classes. So this video is regarding the basic programming. Basic means beginners. B stand for beginners. A stand for beginners symbolic instruction code. Basic programming is beginners all purpose symbolic instruction code. B stand for basic, A for all purpose, S for symbolic, I for instruction, C for code. So this is the first language developed in 1964 or 65 by Mr. John J. Kameny and Thomas E. Coates in the Dartmouth College in 1964, and this was the first easiest high level language जिसमें कि आप लिख सकते थे अपना program in your own computer English language. This was the remarkable step in the field of computer education. Basic language they have developed, and after that number of the programs are done in the basic language. It is a non-structured, later procedural, later object-oriented language written by John Kameny, Thomas E. Coates 1964 में 65 के आसपास डेवलप किया गया. Basic की जो programming है, it is very much easy. You have to write down the statement like input, print, if, for, while. इस तरह के statement आप लिखने के बाद आप इसकी programming कर सकते हो. All that which are related to basic मैं आपको एक by step बताना start कर दूंगा. तो बेसिक समझ में आया ना. तो दिस इज द 8th चैप्टर ऑफ योर बुक एंड बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. कुछ प्रोग्राम आपने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है. द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम यू आर डूइंग हियर इज द मोस्ट in this language we will learn the most of the thing. Now before that I want to tell you what is algorithm. Algorithm means step by step instruction to solve a particular problem. जैसे कि आपने एक डिसाइड किया कि मुझे 2 नंबर इनपुट कराने हैं एंड आई वांट टू 2 नंबर को इनपुट करके उनका ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, रिमाइंडर ये सब निकालना चाहता हूँ. So algorithm, we have to write down the algorithm. Algorithm is a step by step procedure to solve a logical mathematical problem. First of all, you have to input 2 numbers, so you will write down the step 1 input 2 number A and B. Step 2, let sum equal to A plus B. Step 3, let multiplication to A into B. Step 4, step 5, step 6. In this way, we have to write down the online classes. We have to write down the basic program. Or this is the algorithm, and using the command of the basic language we can convert this algorithm into the programming. So an algorithm is the step by step instruction to solve a particular problem. समझ में आएगा algorithm क्या? Algorithm is the step by step instruction to solve a problem. These are the instruction, but we will convert these instruction using commands into the high level language like basic. Now in the basic you can see a sample program I am giving the basic. जैसे कि मैंने बताया था, अभी हमने लिखा enter your name. तो step 1 enter your name, step 1 enter your age, step 1 enter total, step 4 enter percentage, step 5 print display the name, step 6 display age, display total, display. Now I am converting in the program. So in place of this input I am writing input enter your name and dollar. And dollar is a variable. A here is the variable, T is the variable, and P is the variable. At last print name and dollar, print age A, print total T, print percentage P. So वहाँ पर मैंने इनपुट और प्रिंट से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा था. इनपुट की जगह मैंने लगा था राइट एंड यहाँ उसकी जगह डिस्प्ले. बट व्हेन आई एम कन्वर्टिंग दिस प्रोग्राम, वॉट एवर द प्रोग्राम आई हैव गिवन, इस प्रोग्राम को कन्वर्ट किया, वो था एल्गोरिथम एंड दिस इज द प्रोग्राम. सो इनपुट एंटर योर नेम एंड डॉलर, इनपुट एज ए, इनपुट टोटल टी, input enter your percentage P semicolon. तो जो enter your name, age, total percent, these are the messages, and dollar A, T, P, these are the variable where you are storing the value. Now print and dollar, print A, print T, print P. ये सारी values आपको देने के बाद ओके आप इस प्रोग्राम को बेसिक लैंग्वेज को डाउनलोड कीजिए इन जो सिस्टम, और यू कैन रन दिस प्रोग्राम ऑन द बेसिक लैंग्वेज. ओके, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस. Stay safe, stay home, and be sanitized, and continue the online classes.